Good morning, students. Today we are going to start with the new chapter, which is prepositions. क्या होता है preposition? What is preposition? Prepositions show a relationship of a noun or a pronoun with another word. Noun और pronoun से या किसी और word से relation को दिखाता है. जैसे examples in, into, at, on, onto, over, off, for. There are so many prepositions given in this particular list, right? Okay, one more thing before starting the chapter. Today you are going to have the subjective test. Please attempt it and send the PDF to me. You are aware of my cell number, right? And one more announcement which I have to make is there is slightly change in your post-term English 2 syllabus. If you are having pencil and a copy, kindly note down the syllabus again. You will be having articles, preposition, adverb. I'm repeating, articles, preposition, adverbs. And in writing section, you will be having bio sketch and email. I'm repeating myself. Article, preposition, adverb, bio sketch and email. You will be getting the written notice from the school also. But I just wanted to announce this to you all. Right? Some of the preposition, coming back to the chapter, we are going to start with the chapter preposition. Some of the preposition of place, time and direction. In is used for something, somebody inside a limited area. Alka lives in Delhi. कहाँ रहती है? दिल्ली में रहती है. At is used when we relate to a place in terms of function or a purpose. जब function किसी function की वजह से या purpose की वजह से place at is used when we relate to a place in terms of its function or purpose. Alka lives in Delhi at Patel Nagar. Okay? कहाँ particular जगह अगर देनी है तो at. Into अंदर. ठीक है? Bird speak clearly into the microphone. If you are going to speak clearly into the microphone, then only others are able to hear you. Right? On, there is a picture on the wall. The book is lying on the table. To, they will go to Mumbai this year. Or they will go to school. From, she is from Australia. I am from Delhi. Okay, the plane from Hyderabad has arrived. From, over is used for somebody, something resting on the surface, covering it completely or partly from one side to another, on another, the far or opposite side of something. Over, Renu held an umbrella over her head. Over, ऊपर की तरफ. ठीक है? Above, again, upside. Our plane flew above the clouds. Near, he lives near Sudarshana Nagar, near the petrol pump. Besides, yani with the bagal mein, next to something, somebody. Ritu took her seat beside the other interviewers. Ritu was sitting beside Rishi. Okay? Then along Satsa. Ravi and say Prateek walked along the river bank. Walked along the river bank. River bank मतलब नदी का किनारा. Through indicates from one end or side of something to another. Reena was late and was afraid of her mother, so she entered her bedroom through the window. Don't even try to do this. Your mother will catch hold of you and she is going to give you a nice scolding. Although this is an example, but आप ऐसा कभी नहीं करना.
कि मम्मी के डर से खिड़की से अंदर आ रहे हैं, ठीक है। डू नॉट फॉलो दिस एग्जाम्पल एट ऑल। फॉर इज यूज्ड टू शो समवेयर, वी गो फॉर अ वॉक डेली। अच्छा, नाउ थ्रू का एग्जाम्पल देखो, रीना वॉज वॉचिंग cricket match through the window. Okay, Reena was watching cricket match through the window. Under, niche, you know the car is under repairs. The submarine hit the boat under the water. Beyond, the further, shows the further side of something. Nobody is beyond the reach of law. Between, बीच में, I do my homework between 6 and 7. 6 से 7 के बीच में मैं अपना होमवर्क करता हूँ. Among is used in place between when more than two things or people are involved. Poverty is a common problem among the developing countries. Okay, now come to the exercise. Choose the correct preposition from the option given below. To complete the following. Her parents live in Mumbai. Charlie is in home and at home, and his brother is in playground. Our weekly tests are held on every Monday. We immediately jumped into the pond and swam. Rodney is in the lake and is swimming. A cockroach is killed by Rohan. The table is lying between two couches. Mother is cutting vegetables with a knife. The farmer is standing among the crops. She is holding her umbrella over her head. Now see the filling the blanks. See the filling the blanks. She entered into the dark room fearlessly. What do you mean by the word fearlessly? Dhananjay, your hand has been raised up. Yes. Ma'am. Yes, Dhananjay. Ma'am, the meaning of this fearlessly is not afraid of something. बिना डर के काम करना, है ना? So that is what is known as fearlessly. The Titanic sank below the surface of the stormy ocean. He signed the papers with my pen. The news bulletin begins at 9 p.m. The cat jumped over the wall. Distribute the sweets among the children. Yeah, to भी लिख सकते हैं, to the children. A chair is lying near the window. By whom was the dog caught? The aeroplane is flying over the clouds. We all sat at the table for lunch. Now take the correct sentences. This house consists of 5 rooms. You should be ashamed by your behavior. Again, this is a wrong statement. I am not aware for the new rules. I am not aware of the new rules. Then it would have been right. So right now it is wrong. A stranger prevented him from being crushed under a bus. This is a right statement. She is aiming in a distinction in all the subjects. Again, wrong. We must deal to people fairly. We must deal to people. We must deal fairly with people. Okay. He invited his friends for dinner. Again, the wrong statement.
Ritu was charged for murder. Right. Now rewrite the following sentences with correct preposition. देखो बेटा, मैंने ना शॉर्टकट किया है, मैंने सिर्फ जो चेंज करना है उसको सर्कल करके और आंसर लिख दिया है. आप पूरा सेंटेंस यहाँ पर लिखेंगे. मोनिका विल गो टू कश्मीर इन अक्टूबर. आप इस तरीके से अपनी बुक को फिल करेंगे. ठीक है, ये शॉर्टकट नहीं करना. राइट. Neetu congratulated Geeta on standing first in the class. We must not depend on others for help. Do all of us agree on this point? The teacher was angry at my mistake. Divya accused her friend for theft. Divya accused her friend of the theft. The teacher was angry on me. The teacher was angry with me. या at me. दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप. The train is bound of Guwahati. The train is bound for Guwahati. We call on Renu on our way to school. You must care for your health. A car collided with a truck. She insisted on joining the hostel. Hard work is key to success. Somebody is knocking at the door. Sita was married to Rama. My mother prefers coffee to tea. He quarreled with his friend in some ordinary matter. He quarreled with his friend on some ordinary matter. What do you understand by the word quarreled? Quarreled का क्या मतलब है? धनंजय? मैम quarreled का मतलब है लड़ना, लड़ना. Yes, एक दूसरे से झगड़ना. Good, धनंजय. एक दूसरे से झगड़ना क्वारल का मतलब होता है. Trust in God and do the right thing. The boy warned the driver of the danger. We wonder about the greatness of Gandhiji. So this was your chapter about preposition, right? If you are having any doubt regarding this chapter, please raise your hand so that I can take it up right now. If you are having any doubt regarding the preposition. Yes, Dhananjay. मैम ये PDF आ जाएगी? ये ऑलरेडी आपके पास चल रही है, आप इसमें से देख के कर सकते हैं धनंजय. ओके मैम, थैंक यू. गौरव जैन. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग गौरव. मैम ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? साधारण. यस. ओके. गौरव, you are the student of class 6 यस मैम. Why are you absent today? मैम माय मदर हेल्प मैम. मैम मेरी मम्मी की मैम तबीयत थोड़ी खराब थी मैम, इसलिए एब्सेंट था मैम आज में. अच्छा ठीक है, तो फिर ऑनलाइन टेस्ट दे देना गौरव. यस मैम. ओके. दिव्यम. यस दिव्यम. मैम जो एक सेंटेंस आया था ना मैम, माय मदर प्रेफर कॉफी देन टी. यस. मैम उसमें ये देन अगर लगा के रखे मैम तो भी वो सही तो हो सकता है ना मैम? हाँ हो सकता है, बट देन वी हैव टू यूज द prepositions, है ना. Rewrite the following sentence with correct prepositions. Okay, so हमें prepositions का use करना है. Otherwise the sentence is not wrong. While speaking we use this sentence very often, and you are absolutely right. Okay, दिव्यम, syllabus क्या है बेटा पोस्ट टर्म का, इंग्लिश 2 का?
मैम सिलेबस तो मैम मैंने अभी तक देखा नहीं है मैम। बधाई। मैं होमवर्क कर रहा। अच्छा, और आज आपका टेस्ट है, आपको मालूम है सब्जेक्टिव टेस्ट है आज आपका? यस मैम। किस चैप्टर का है बेटा? मैम मैनी विद एनी। दिव्यम, आपका नाम दिव्यम ही है? यस मैम। ओके, सो दिव्यम, आज एनी विन एन ई का टेस्ट नहीं है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो का टेस्ट है। ओके, यस मैम। learn it and give the test and send the PDF. Okay? यस मैम। Any question from this chapter or from the information bureau, you can ask me right now. थोड़ी देर में आपके पास पेपर आ जाएगा और शायद आ चुका होगा। आपको टेस्ट देना है। ओके, धनंजय, you want to say something? यस Yes. मैम। हाँ बच्चे बोलो। टेस्ट आया था उसमें एक है ना, वही एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था। हाँ बेटा बोलो। उसमें है ना, आई हैव लॉस्ट माय डैश। तो मैम है ना, मेरे को याद था है ना, ये आई हैव लॉस्ट माय स्पेक्स है ना, पर उसमें नोटबुक था। उसमें क्या था? उसमें नोटबुक सही था। और जब मैंने ना टेस्ट करने के बाद देखा कि मैंने ऐसा गलती कर दी, तो है ना उसमें है ना, आई हैव लॉस्ट माय दो सेंटेंस हैं। आई हैव लॉस्ट माय स्पेक्स कॉल्स ग्रैंडमा, आई हैव लॉस्ट माय नोटबुक मदर, आई हैड इट यस्टरडे। So I have lost my notebook is the sentence spoken by the poet itself, and I have lost my specs is the sentence spoken by the grandma. ठीक है, तो दोनों अलग अलग है बेटा, एक तो हो ही नहीं सकता। ओके मैम, पर वो क्वेश्चन था आई हैव लॉस्ट माय डैश। डैश, आई हैव लॉस्ट माई डैश। हाँ, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। और मैम उसमें ऑप्शन स्पेक्स था ना, मैंने स्पेक्स किया, मेरे को याद था स्पेक्स, तो ना वो मेरा गलत आ गया था वो बस। हाँ, वो गलत आ गया था क्योंकि यू शुड हैव बीन रिटन नोटबुक रादर देन स्पेक्स। ओके, और आज का टेस्ट दे देना धनंजय। वैसे तुमको बोलने की जरूरत नहीं होती, तुम्हारा आ जाता है, बट स्टिल आई एम रिमाइंडिंग यू। अच्छा धनंजय, इंग्लिश 2 का सिलेबस क्या है पोस्ट टर्म का बेटा? मैम, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स एंड बायोस्केच और स्पीच। ईमेल, नॉट स्पीच, ईमेल। ठीक है, हम ये सेक्शन अभी करने वाले हैं ईमेल का। हमने आज रुक जो मैम, मैम आप वापस से बोल सकते हो, आपने बायोस्केच के बारे में क्या कहा था? मेरे को सही से सुना ही नहीं दिया वो। आपको बायो स्केच और ईमेल करना है। मैं अभी ये नोटिस डालूंगी आपके पास, आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी आ जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा इसका भी, करेक्शन का। ठीक है, ईमेल, हाँ ईमेल, राइट। इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, थैंक यू मैम। okay, so this was the chapter and we are going to do the email section in the next session. So we have completed articles and prepositions, right? And email section is left and adverb is left. Adverb we have, I think we have completed adverb. Can anyone tell me whether we have completed the adverb part or not? Can anyone tell me that whether we have completed the adverb part or not? Yes, Dhananjay? मैम,
ये करा दिया था, पर है ना दूसरी मैडम ने कराया था। एडवर्ब पार्ट आप लोगों का हो रखा है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ क्या आप लोगों ने किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो धनंजय ने किया हुआ है, क्या बाकी बच्चों ने भी किया हुआ है? गौरव जैन? नो मैम। हेलो। हेलो गौरव, कैन यू हियर मी? यस मैम। ओके, एडवर्ब किया हुआ है आपने? नो मैम। Okay, fine. We will be finishing adverb also and the email part also. We have just completed article and prepositions. अभी हमारे पास 2 टॉपिक बाकी हैं. बायो स्केच हमने कर लिया है, ठीक है? So 3 चीजें हो गई हैं और 2 चीजें अभी भी बाकी हैं. We will finish it off. Although adverb वाला जो पार्ट है आपकी मैम ने पहले करवा दिया था, पर अगर आपने नहीं किया हुआ है, we are going to do it again, right? So do not worry कि सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है, इस वजह से परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, right? And all the students are going to give the this test, subjective test. Gaurav, you have to give the subjective test, okay? And all other students are definitely going to give the subjective test. Siddharth, Tejas, Shailendra, everyone, Divyam, everyone, okay? So today we are going to end this session here itself, okay? We will meet next time. Bye for now.